Hello, my dear students. Now, in this video, we will study about rate of change in velocity, means to acceleration. Trying to understand what I am saying. What I am saying, beta, during uniform motion in a straight line, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. जब हम स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती. स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती. 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है. लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी वेरी करती है. आवर वेलोसिटी वेराइज, हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. एक्चुअली वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है. हो सकता है ये चेंजिंग हो रही हो, डायरेक्शन सबका सेम हो, डायरेक्शन सेम है, सब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने का कारण यहां कौन है बेटा? यहां मैग्नीट्यूड है. वेलोसिटी चेंज होने का कारण, सो फर्स्ट रीजन टू चेंज द वेलोसिटी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, to change in magnitude. Here the magnitude is changed, 2 meter, 3 meter per second, 8 meter per second, but direction is same, but my velocity is changing. It may be also 2 meter per second in north, 2 meter per second in any other direction, south, 2 meter per second east. Here magnitude is same, but direction is changed. तो डायरेक्शन चेंज होने से भी हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. अगर डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. या दोनों चेंज हो सकता है. 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, 4 meter per second in this direction. Here magnitude is changed and also direction is changed. 2 to 3 to 4 direction is also changed. So velocity can be changed, will be changed, may be changed due to change in magnitude or in direction or in both. So here, so our velocity here change with time. So this change of velocity expressed in the term of acceleration. ये जो velocity में change हो रहा है of an object, the change of velocity of an object, it expressed, specified in a physical quantity that is called acceleration. वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है बेटा, जो हमारा वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेरिएबल है हमारी वेलोसिटी, परमानेंट चेंज हो रही है किसी भी रीजन से, मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण या डायरेक्शन में या दोनों में, देन अ फिजिकल क्वांटिटी देन कैन एक्सप्रेस, वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस कर सकती है, व्यक्त कर सकती है, शो कर सकती है इस वेलोसिटी में चेंज को टाइम के साथ,
that is called acceleration. So what is the definition of acceleration? The rate of change in velocity. The rate of change in velocity of an object with respect to time is called acceleration. What is acceleration? The rate of change in velocity. Change in velocity with respect to time is called acceleration. What is acceleration? The rate of change in velocity. The rate of change in velocity of an object with time is called acceleration. The rate of change in velocity with respect to time is called acceleration. It is represented by small a. With respect to time. You can also show this. Change in velocity. Change in velocity. If I consider my initial velocity, अगर हम मान लेते हैं बेटा किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है. So change in velocity, final velocity minus initial velocity. This is change in velocity with respect to time. That is time interval. That is called acceleration. And acceleration is also a vector quantity. This is a vector quantity. It can be also represented as this is a vector quantity. It's a both magnitude and direction. And what is its unit? Acceleration की यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज होगा तो यूनिट तो नहीं बदलेगी ना. मेरे पास आज 10 रुपीज है, कल 50 रुपीज हो गए तो 40 रुपीज के सेंस हुए तो कद्दू तो बन नहीं गए, वो रुपीज ही है ना. सो चेंज इन वेलोसिटीज यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड and time unit is second. So meter per second is square. This is the unit of the acceleration. It can be also written as meter second to the power minus 2. And after that, now cleared. So what is acceleration? The rate of change in velocity with respect to time is called acceleration of an object, and it is a vector quantity. If the initial velocity, प्रारंभिक velocity is the u vector and the final velocity is v vector, so the change will be find out by the final velocity minus initial velocity. We can calculate the change by this formula, and upon delta t, that is the time interval to change in the velocities, v vector minus u vector upon delta t. And now acceleration is also a vector quantity, so it can be represented, and a vector is equal to delta v vector upon delta t. So the unit of acceleration, the unit of velocity, change in velocity's unit is also the same in the velocity, that is meter per second upon second, and second comes down to second is square, and that meter per second is square, and second square goes to per as meter second to the power minus 2. And after that, I want to tell you, actually acceleration have both sign, positive sign also and also a negative sign. Let specify this. I am describe this why acceleration positive and also negative. I will tell you in 1 minute.
acceleration is taken with positive sign if its direction is in the direction of the velocity. हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन में लेते हैं बेटा अगर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो. वी टेक द एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव साइन इफ इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के सेम है, कॉन्साइड्स है, तो हम कह सकते हैं हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन में लेंगे. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. If the direction of the acceleration is the opposite direction of velocity, अगर acceleration का direction velocity के direction के opposite है तो हम acceleration को negative sign में लेते हैं. So this is called negative acceleration or retardation. अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, देन हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन में लेते हैं. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या हम उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं. ओके, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव acceleration. Now we'll study about uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay, uniform acceleration and non-uniform acceleration. What is the uniform acceleration and what is non-uniform acceleration? Let's see. And now we will study about uniform acceleration and non-uniform acceleration. What is the uniform acceleration? Trying to understand, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो, any object travel in the straight line, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो and the change in velocity is in equal amount, in equal time interval. Actually this is the 1 second and velocity is 2 meter per second. In next 1 second velocity is 4 meter per second. In next 1 second velocity is 6 meter per second. So change in velocity is in the equal amount. Here the changing is 2 meter per second in velocity, here also changing is 2 meter per second. सो चेंज इन वेलोसिटी इज इन इक्वल अमाउंट बेटा. अगर आप देखें तो दो, जैसे फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में जो वेलोसिटी है दैट इज द टाइम इंटरवल इन 1 सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल, एंड वेलोसिटी चेंज 2 to 4, दैट मीन टू द चेंज इज द 2. एंड आल्सो इन नेक्स्ट 1 सेकंड फिर से हमारा वही टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. सो द वेलोसिटी चेंज 4 to 6, दैट मीन टू से 2 मीटर पर सेकंड. सो द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम इन एवरी सेकंड. सो दिस इज द कॉल्ड uniform acceleration. What is the uniform acceleration? If any object travel in a straight line, what I am saying, if any object travel in a straight line and its velocity change, yes beta, so acceleration generate. When acceleration generates when velocity change. Acceleration तभी होता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है. And velocity change in equal amount, 2 to 4, so the changing is 2, 4 to 6, changing in 2. Velocity equal amount में change हो रही है in equal interval of time. So this is called uniform acceleration, and the motion of the object is called uniformly accelerated motion. This motion is called uniformly accelerated motion, and this acceleration is called uniform acceleration. Now we see the non-uniform acceleration, and just opposite, just inversely, either you can say just oxymoron of this conception, non-uniform motion. Let's see. What is non-uniform motion? What is non-uniform motion? What is non-uniform motion? When the velocity of any object change in unequal amount in equal interval of time. When velocity of any object it changes in an unequal amount, different amount, in equal amount of time.
This acceleration of object is called non-uniform acceleration. See here. 1 second, velocity is 2 meter per second. Next 1 second, velocity is 4 meter per second. Next 1 second, velocity is 5 meter per second. Next 1 second, velocity is 3 meter per second or 1 meter per second. Here velocity change. Yes, 2 to 4 to 5 to 1. In equal interval time, every interval time is same, 1 second. But amount of velocity change, here the changing is 2, here the changing is 1, here the changing is 4. In every second, the velocity change amount is different. हर सेकंड में velocity जिस amount में change हो रही है वो different है. So if travel any object such type that the amount of change in velocity is different in equal interval of time, so this is called non-uniform acceleration. जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो चेंज है वो डिफरेंट हो तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. एंड इस तरीके के मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. ओके, एंड आपको एक एग्जांपल हम दे दें यूनिफॉर्म मोशन का या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. ग्रेविटी, व्हाट इज बेटा? ग्रेविटी. You know beta, when any object in freely fall motion, when any object falling towards earth center, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. कितना? हर सेकंड, हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है. अभी 9.8 है ना, अगले 1 सेकंड में हो जाएगा 19.6, इसका 2 टाइम्स. अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी ऐड कर दें 18 1 2 28 29. एवरी 1 सेकंड इसमें ऐड हो जाएगा अगले 1 सेकंड में 29.4 प्लस 9.8, यानी वेलोसिटी हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है. हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हियर द एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट मीन टू से इन एवरी सेकंड वेलोसिटी इंक्रीजेस 9.8 meter per second. This is called uniform acceleration. This is gravitational acceleration, that is represented by small g. The rate of change in velocity of an object falling freely under the gravity. The rate of change in velocity, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां गिर रही हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां गिर रही हो, नीचे गिर रही हो, तब इसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तब इसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है. हर सेकंड इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज होता है. जब ये ऊपर से कहां गिरता है? नीचे गिरता है. तब जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity of an object falling freely under gravity with time. The rate of change in velocity, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसका जो रेट है टाइम के साथ, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां गिर रहा हो? नीचे, उस समय जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी of an object falling freely under gravity with time is called gravitational acceleration, small g. This is total complete acceleration. Now we will meet in next video with next topic. Goodbye.